Good morning, dear students. I am Reena Rani, PGT Commerce, KVONGC Dehradun. Today, through this video, I am going to explain you the topic internal sources of recruitment. So, dear students, before starting with the topic, first of all, I would like to tell you what is staffing. Dear students, in organization, before the chapter staffing, we did organizing. In organizing, we created the post, like we uh, we created this reporting relationship. We got to know who will be the subordinate, who will be the superior. So in basically in organizing, we created the post. Now to fill the post, we do staffing. जो पोस्ट क्रिएट की गई हैं उसमें हमने अब लोगों को अपॉइंट करना है. सो फॉर दैट वी डू staffing. So here are three aspects of, or you can say components of staffing. First one is recruitment. Recruitment actually means inducing or attracting more and more candidates. Means what you do in recruitment, what a company does in recruitment, it creates a pool of candidate so that it can choose a suitable candidate for the post it want to fill. Alright, so in recruitment actually we induce people to apply for the job so that we can have a suitable candidate. Suppose we have 100 people from whom we have to choose one, or we have 20 people from whom we have to choose one. So if we have 100 people, we can choose the best one. That person can fulfill all the requirements which we need, almost all right. So it is actually the process where we attract people to apply for the jobs we have created. So basically there is a gap between the applicant and the organization, the applicant, the employee and the organization which has the post. So recruitment actually fills this gap. It makes the applicant and the organization come near to each other so that the applicant can apply for the job which the organization had created. Second aspect is selection. What is selection? See, in recruitment we created a pool of candidate. Now to choose the best one from that pool called selection. So in selection basically we assess and evaluate our requirements. We assess and evaluate the people which whom had apply for the job, and finally we pick the best one according to our requirements. Dear students, the third one is training. Now we have got the person, we have selected the person, so he knows the work, but if we want to make him work according to our expectations, if we want him to work according to what we want, then we need to give him some training. कुछ training देनी पड़ेगी जैसा आप काम करवाना चाहते हैं. Okay, so to develop his skills, to make that person acquainting with the skills, we need to give him or her some training. So these are the three components of staffing. In today's video we are going to understand the topic recruitment, and the subtopic is internal. See students, recruitment creates a pool. लोग अप्लाई करते हैं, but how the company does recruitment, apply कहाँ से करे, what the company wants, within the company or outside the company, whether the company wants to make the people apply from the job from inside the company, जो कि आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हैं उसमें से आप फिल करना चाहते हैं, या फिर बाहर के एम्प्लॉयज़ में से आप बाहर के लोगों से आप लोगों को आप अपॉइंट करना चाहते हैं. सो दैट इज़ इफ़ यू पिक द एम्प्लॉय फ्रॉम योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल रिक्रूटमेंट, and if you pick the employee, the person from outside the world, that recruitment will be called external source of recruitment. So here recruitment is the process of searching for prospective employees
whatever your requirements are for that post. We search the suitable person according to our requirements. Recruitment is basically a positive process where we do not reject anybody. किसी को हमने reject नहीं किया. Everybody is only applying. That is why it is called positive process. Whereas when we reject the people, when we select the people, जहाँ हम सिलेक्शन करते हैं वहाँ एक या दो को सिलेक्ट करते हैं, बाकी को रिजेक्ट करते हैं. So selection is called a negative process and recruitment is the opposite. It is called the positive process where we are not going to reject anybody. So this can come in your MCQ, whether recruitment is a positive process or a negative process. It precedes the selection process. It comes before selection process. First recruitment takes place and after that selection. It creates, I have already told you, it creates a pool of candidates so that management can select the most suitable candidate. Okay, now our topic, recruitment process actually involves identifying various sources of recruitment. Number 2, evaluating validity of sources. Then we evaluate whether the source we have chosen is validated or not, is valid or not. Then choosing the most suitable source. Then we choose the most suitable source according to our requirements and attract and motivate prospective candidates to apply. Now, internal sources of recruitment. Internal sources, when we, when we appoint people, appoint is basically a selection process. When we want people to apply from our own organizations, हमारी अपनी organization में already existing जो employees हैं उनसे हम अगर लेना चाहते हैं तो that will be called internal source of recruitment. So dear students, basically there are two important sources of internal recruitment. First one is transfer, second one is promotion. Let's start with transfers. आपने सुना भी होगा, नॉर्मली आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी सुनते होंगे कि किसी के फादर का या मदर का ट्रांसफ़र हो गया या आपके किसी रिलेटिव का ट्रांसफ़र हो गया. सो ट्रांसफ़र इज़ बेसिकली शिफ्टिंग एन employee from one place to another without changing the role, without changing the responsibility, without any change in the salary or incentive. आप बेसिकली एक पोस्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर रहे हैं. द लेवल ऑफ वर्क इज़ सेम, द स्टेटस ऑफ वर्क इज़ सेम. सो ट्रांसफ़र इज़ एक्चुअली अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. आप हॉरिजेंटल मूवमेंट कर रहे हैं. सपोज देयर इज़ एन एम्प्लॉय हु इज़ अ प्रोडक्शन मैनेजर एंड यू आर शिफ्टिंग हिम टू अ सेल्स मैनेजमेंट. सो नाउ ही बिकम्स अ सेल्स मैनेजर. सो इट इज़ एक्चुअली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. सेम ही लाइन में जा रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में. ओके, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर without changing responsibilities and status of employees. Dear students, I make it more understand by giving an example. Like if a principal in a school, there is a principal and that principal is shifted or that principal is transferred to another school as a principal only, so that is called transfer. Or a teacher, suppose I am PGT Commerce, I am being shifted, I am being transferred to some other place. There also I am working as PGT Commerce only, so I have got transferred, I have been transferred. Alright, so transfer is basically horizontal movement where the roles, the responsibility, the salaries are not at all change नहीं हुए, वही सेम रोल है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही अथॉरिटी एंड द सैलरी पैकेज इज ऑल्सो सेम. Generally no change in compensation level and authority level. For example, transfer of clerk from account department to purchase department. All right, account department में भी वो person clerk ही था and in new place, that is purchase department, also he is only a clerk. So he has got transferred.
एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर. So dear students, let me tell you one thing. Transfers actually help us in fulfilling our requirements. See, you know the staffing process. In step 1 of staffing process, we did estimation of manpower, where we did two types of analysis. आपने पढ़ा होगा, workload analysis and workforce analysis. वर्क लोड एनालिसिस इज़ बेसिकली आपके पास काम कितना है या आपके पास पीपल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ वर्कर्स यू हैव, लोग कितने हैं काम करने के लिए. एंड वर्क फोर्स एनालिसिस इज़ बेसिकली work load analysis is basically I think I went wrong, I spoke in a wrong way. Workload analysis is basically the number of workers you need, आपको कितने लोगों की ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए. एंड वर्क फोर्स एनालिसिस मीन्स आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी हैं. एंड आफ्टर डूइंग दीज टू एनालिसिस वी एक्चुअली कंपेयर कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, आपका डिपार्टमेंट ओवर स्टाफ्ड है या अंडर स्टाफ्ड है. सो टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट, अगर कोई डिपार्टमेंट ओवर स्टाफ्ड है देन यू कैन ट्रांसफ़र एम्प्लॉयज़ फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट to the department which is actually understaffed. All right, so through transfer or through internal sources of recruitment, what we do, we actually transfer or we actually fulfill the needs of manpower of understaffed department from overstaffed department. जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं वहाँ से उनको ट्रांसफ़र करके उनको शिफ्ट करके आप जहाँ लोग आपकी मैन पावर कम है वहाँ पर हम शिफ्ट कर देते हैं. ऑल राइट, so transfer is basically changing of position, changing of workplace from one place to another without changing any role or generally without changing salary package. Let's move on to the second type of internal source of recruitment, that is promotion. Dear students, promotion is actually vertical, जहाँ आप आगे बढ़ रहे हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, ऊपर चल रहे हैं, you are getting higher position. So promotion is a vertical movement of employee where the employee gets higher status, where the employee gets higher authority, higher responsibility, and of course more salary, or you can say the compensation is also increased. All right, dear students, promotion refers to shifting of employees from one job position to other with higher level of authority. आपका authority and responsibility and salary package have increased. It helps to improve motivation, loyalty and satisfaction level of employees. Dear students, when a person is working in an organization, that what he wants, what will motivate him? दी प्रमोशन विल मोटिवेट हिम, कि आगे बढ़ सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को चांस देती है आगे बढ़ने का, देन दैट एम्प्लॉय गेट्स मोटिवेटेड, दैट एम्प्लॉय बिकम्स लॉयल टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन से दैट प्रमोशन, दैट स्टेटस विल change his attitude, that status will satisfy his needs. एक टाइम पर आकर आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल होती हैं, तो आपको व्हाट यू वांट, एक स्टेटस नीड आ जाती है, दैट यू वांट प्रमोशन. एक ही पोजीशन पर आप काम कर रहे हैं, आफ्टर सम टाइम यू विल फील कि नहीं, मुझको आगे बढ़ना है, इस पोस्ट से और बड़ी पोस्ट चाहिए. सो टू फुलफ़िल दैट सेटिस्फेक्शन, प्रमोशन इज़ नेसेसरी. इन प्रमोशन दी अथॉरिटी लेवल, क्या क्या बढ़ेगा, आपका अथॉरिटी बढ़ेगा, एंड ऑफ कोर्स जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है तो अथॉरिटी भी बढ़ रही है. द रैंक, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉय ऑल इंक्रीज. फॉर एग्जाम्पल, प्रमोशन ऑफ अ क्लर्क टू अकाउंटेंट पोस्ट, और द एग्जाम्पल ऑफ अ प्रिंसिपल, दैट अ प्रिंसिपल becomes deputy commissioner, or the principal
or you can say a teacher. If you take my example, PGT Commerce, if I get promotion, I will become principal. So in this way, promotion means shifting of employees from one job position to other with higher level of authority. अभी मैं टीचर हूँ, if I apply for a principalship or principal position, then that will be called as promotion. Higher authority आ गई, higher responsibility आ गई, and of course the compensation will also become high. So these were the two sources of these were the two sources of internal recruitment. Now let's analyze whether internal source of recruitment is good or bad. So here are the merits and demerits of internal source of recruitment. Dear students, I have already told you कि जब आप अपनी ही organization से employees को लेते हैं तो those employees get motivated, they will become loyal to your organization. So these all are the merits. So I am going to explain it now. It motivates the employee gets motivate कि मुझे इस organization में बड़ी position मिलेगी. It simplifies the process of selection and placement. Dear students, when an organization gets persons from its own organization, then what he knows that person very well कि उस person में क्या चीज़ अच्छी है, उसको किस post में लेकर जाया जाए, कहाँ पर उसका बहुत एक साउंड पर्सनालिटी है, या कहाँ पर उसका वर्किंग लेवल बहुत किस पोस्ट पर वो सूट करेगा, उसकी स्किल्स किस पोस्ट को सूट करेगी. सो द ऑर्गेनाइजेशन नोज दिस थिंग बिकॉज ही और शी वॉज ऑलरेडी वर्किंग इन दैट वेरी ऑर्गेनाइजेशन, एंड द ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव प्लेसमेंट ऑल्सो वेरी ईजीली, क्योंकि पता है आपको उस एम्प्लॉय की क्या स्किल्स हैं, किस चीज़ में वो इतना अच्छा है, किस चीज़ में वो अच्छा कर सकता है. तो देयर यू गिव हिम दी प्लेसमेंट ऑल्सो. Number 3, no need for induction training. Here you should know what is induction. When a new employee is recruited or is selected in an organization, then to make that employee familiar with the rules and regulation of organization, the induction training is given. So the employee is already from your only organization, so there is no need to make him familiarize with the rules and regulation, and so there is no need to give any induction. All right. Of course आपको ट्रेनिंग एक्स्ट्रा नहीं देनी पड़ी एंड एम्प्लॉई इज़ गेटिंग मोटिवेटेड, तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी. अगर एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो एफिशिएंटली वर्क होगा, आपके रिसोर्सेज का, आपकी मैन पावर रिसोर्स का अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा है. सो दिस सोर्स इज़ एक्चुअली इन मैनी टर्म्स इट इज़ इकोनॉमिकल. बहुत अच्छा है आपके लिए. यू आर यूजिंग योर रिसोर्सेज एफिशिएंटली, इट्स इकोनॉमिकल. आपकी एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं होगी. एम्प्लॉय पहले से ही उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो इतनी ईजिली वो छोड़ के नहीं जाएगा. ऑल राइट. नाउ द अदर साइड, डिमेरिट्स. ऑफ कोर्स किसी भी चीज़ के अगर मेरिट्स हैं तो डिमेरिट्स भी होते ही हैं. सो हियर आर द डिमेरिट्स. इट एक्चुअली प्रिवेंट्स इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट. आपके पास जो ऑलरेडी टैलेंट है आप उसी को यूज़ कर सकते हैं. एक्सटर्नल सोर्सेस में आप बाहर से भी टैलेंट ले सकते हैं. यू आर एबल टू इंडक्ट यंगस्टर्स, यू आर एबल टू इंडक्ट फ्रेश talented persons, but in internal source of recruitment you can only have the skill which are already having with you. You are not having, you will not be able to induct fresh talent if you go for internal source of recruitment. Second demerit is employees may become lethargic. They know that they will be promoted, they will be transferred, they will be actually promoted whether they work or not. उनको अगर पता चल गया कि इसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन होनी ही होनी है, so they will not do anything, they will not develop themselves, they will not increase their skills. Alright, so employees become lethargic. And third demerit is a new company cannot use it. इतने एम्प्लॉयज़ हैं ही नहीं और न्यू कंपनी कहाँ से इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करेगी. सो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एनी न्यू कंपनी.
reduces the spirit of competition. एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी नो कि हमारे पास हमें ही ये कंपनी प्रमोशन देगी, बाहर से रिक्रूटमेंट नहीं होगी, तो दैट विल रिड्यूस द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन इन योर एम्प्लॉयज़. दे विल नॉट डेवलप देयर स्किल्स. वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं करेंगे बिकॉज दे नो कि हमें प्रमोशन मिल जाएगा. सो इट बेसिकली makes your employees lethargic, and there is no spirit of competition in them. Last one, frequent transfers. If you keep on filling your post from internal sources, then the employees will get transfers frequently. So if the employee gets transfer frequently, then the productivity gets reduced. इतनी जल्दी अगर आप एम्प्लॉय आपका ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो सेट ही नहीं हो पा रहा है एक पर्टिकुलर प्लेस पर. सो हाउ विल ही गिव हिज प्रोडक्टिविटी? सो इन दिस वे द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय गेट्स रिड्यूसेस. So these are the merits and demerits of internal sources of recruitment. I hope you understood the topic very well. Okay, stay home, stay safe. Thank you.